Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. In today's lecture, I would like to discuss about most important MCQs of the computer science, that is the computer networks. So let's begin. Question number 1. CSMA, CSMA stand for A. Carrier sense multiple access. B. Carrier sense multiple avoidance. C. Client sense multiple access. And D. All of the above. So CSMA stand for carrier sense multiple access. A. So the correct option of this question is the A. Carrier sense multiple access. Question number 2. ISO stand for A. Internal Organization for Standardization. B. International Organization for Standardization. C. International Organization for Security. And D. None of the above. So ISO stand for the International Organization for Standardization. So the correct option is option B. Question 3. Data that passes through the transport layer will be acknowledged by the destination device. This type of connection is called. वो डेटा जो ट्रांसपोर्ट लेयर से पास होता है इसको डेस्टिनेशन डिवाइस एक्नॉलेज करता है कि डेटा आ गई है या नहीं आ गई. दिस टाइप ऑफ कनेक्शन इज कॉल्ड. इस टाइप ऑफ कनेक्शन को क्या कहा जाता है? A. Hop duplex. B. Full duplex. C. Connection oriented. And D. Connectionless. Connection oriented में पहले सबसे पहले टू डिवाइसेस के दरमियान सबसे पहले जो है कनेक्शन बनता है. इसके बाद सेशन इस्टेब्लिश होता है और सेशन के बाद जब कम्युनिकेशन हो जाती है तो सेशन टर्मिनेट हो जाता है. तो द करेक्ट ऑप्शन इन दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी. कनेक्शन ओरिएंटेड. Question number 4. A system in which a small data frame is passed from device to device across the network in a predetermined order is known as. ऐसा सिस्टम जिसमें एक छोटा सा डेटा फ्रेम एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक एक ख़ास ऑर्डर के तहत मुंतकिल होता हो, इस सिस्टम को क्या कहा जाता है? A. Polling. B. Buffering. C. Token passing. And D. All of these. So the correct option in this question is token passing. In token passing, data frame is passed from device to device across the network in a predetermined order. Question number 5. The switching method in which a dedicated connection is made between the two communication devices. स्विचिंग का वो तरीक़ा जिसमें दो कम्युनिकेशन डिवाइस के दरमियान एक ख़ास कनेक्शन लिंक बन जाता है. इस सिस्टम को, इस स्विचिंग मेथड को क्या कहते हैं? A. Message switching. B. Circuit switching. C. Packet switching. And D. None of the above. So the correct option in this question is option B. Circuit switching. In circuit switching, first of all, a dedicated connection is made between the two communication devices. Question number 6. Connection that allow two-way simultaneous dialogue is known as. वो कनेक्शन जो एक ही वक्त दोनों अतराफ डेटा की मुंतकिली कर सके, इस सिस्टम को, इस कनेक्शन को क्या कहा जाता है? जिसमें एक ही वक्त में दोनों अतराफ पर कम्युनिकेशन मुमकिन हो. A. Hop duplex. B. Full duplex. C. Simplex. And D. Datagram. So the correct option is option B. Full duplex. Question number 7. Language that allow computers to communicate each other or known as. वो ज़बान जो कंप्यूटर को आपस में कम्युनिकेट कर सके, उसे क्या कहा जाता है उस लैंग्वेज को? A. Addressing. B. Fooling.
C. Protocols, and D. Dialogue. So the correct option in this question is C. Protocols. Protocols are languages that allow computer to communicate with each other. Question number 8. Which type of system works best for large network? लार्ज नेटवर्क में कौन सा सिस्टम बेहतरीन काम करता है? ए. कनेक्शन, बी. कनेक्शन लेस, सी. मल्टीप्लेक्स, and D. deterministic network. So deterministic networks is a system which work best for large network. Question number 9. OSI model consists of how much layer? OSI model कितनी layers पर मुश्तमिल होता है? A. 5, B. 9, C. 7, D. 4. So the correct option is option C. 7. There are 7 layers in the OSI model. Question number 10. Which OSI layer is responsible for transmission of bits over network? OSI layer का कौन सा OSI मॉडल का कौन सा लेयर बिट्स ट्रांसमिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है? ए. डेटा लिंक लेयर, बी. सेशन लेयर, सी. फिजिकल लेयर, डी. प्रेजेंटेशन लेयर. So physical layer is that layer of the OSI model which is responsible for the transmission of bits over the network. So the correct option is option C. Physical layer. Question 11. Which OSI layer packages data into frame? OSI model का कौन सा लेयर डेटा को फ्रेम्स में कन्वर्ट करता है? A. ट्रांसपोर्ट लेयर, B. नेटवर्क लेयर, C. session layer, D. data link layer. So data link layer is that layer of the OSI model which packages data into frame, which convert data into frame. So the correct option in this question 11 is the option D. data link layer. Question number 12. Media access control sublayer of the data link layer is responsible for. डेटा लिंक लेयर का जो सब लेयर है जिसे मीडिया एक्सेस कंट्रोल कहा जाता है, MAC, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? ए. लॉजिकल एड्रेसिंग, बी. फिजिकल एड्रेसिंग, सी. ट्रांसमिशन ऑफ बिट्स, एंड डी. ऑल ऑफ द अबव. सो मैक जो है ये फिजिकल एड्रेसिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है. ऑप्शन बी. फिजिकल एड्रेसिंग. Question number 13. Which layer of the OSI model implements error checking using checksum? OSI model का कौन सा लेयर checksum को इस्तेमाल करते हुए एरर को मालूम करता है, एरर डिटेक्शन करता है? A. मीडिया एक्सेस कंट्रोल, B. लॉजिकल लिंक कंट्रोल, C. सेशन कंट्रोल, and D. network control. So the correct option in this question is option A. media access control. Make layer of the OSI model implement error checking using checksum. Question number 14. Which of the following access method listen to media for network traffic before sending data? कौन सा एक्सेस मेथड डेटा ट्रांसमिट करने से पहले मीडिया को लेसन करता है कि आया मीडिया फ्री है या नहीं है? अगर फ्री है तो डेटा सेंड करता है, अगर फ्री नहीं है तो फिर वो डेटा को नहीं भेजता. तो ये किसकी ज़िम्मेदारी है? नंबर 1, सेस्मा CA. सेस्मा स्टैंड फॉर कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस स्लैश कैरियर अवॉइडेंस, कोलिजन अवॉइडेंस. B. सेस्मा CD. सेस्मा मीन्स कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस and CD means collision detection, and C. falling, and D. buffering. So SESMO CD, option B, access method listen to the media for network traffic before sending data. So we have the correct option, option B, SESMO CD. Last question number 15. The layer of the OSI model which act as an interface is called. OSI model का वो लेयर जो इंटरफेस के तौर पर काम करता है, इसे
क्या कहा जाता है? A. Network layer, B. Session layer, C. Data link layer, and D. Application layer. So the correct option in this question is option D. Application layer. Application layer is that layer which provided interfaces for the user to communicate with the system.